ভোটাৰ তালিকাৰ জালিয়াতিৰে মহাৰাষ্ট্ৰ জয় কৰিলে নেকি NDA? 5 মাহত কেনেকৈ বৃদ্ধি পালে 7 লাখ ভোটাৰ? 5 বছৰত 32 লাখ লোক অন্তৰ্ভুক্ত ভোটাৰ তালিকাত। মহাৰাষ্ট্ৰত নিৰ্বাচনক লৈ সংবাদমেল ৰাহুল গান্ধী, সঞ্জয় ৰাউত, সুপ্ৰিয়া সুলেৰ। প্ৰায় 2.5 মাহ খবৰ হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱা। ৰাজ্যখনত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ NDA। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিল বিজেপিৰ দেৱেন্দ্ৰ ফাডনবিছ। কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে বিতৰ্ক। বিশেষকৈ ভোটাৰ তালিকাক লৈ অব্যাহত আছে বিতৰ্ক। শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীৰ কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বিতৰ্কত নতুন মাত্ৰা দিয়ে কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধী, শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউত আৰু শাৰদ পাৱাৰৰ NCPৰ লোকসভাৰ সাংসদ সুপ্ৰিয়া সুলে। সংবাদমেলত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ, 5 বছৰত মহাৰাষ্ট্ৰত ভোটাৰ তালিকাত যিমান ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল তাতকৈ বেছি 5 মাহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। 2019 চনৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে ৰাজ্যখনত 32 লাখ ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ লগতে দাবী, তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকা লাগে, যি তালিকা অনুসৰি মহাৰাষ্ট্ৰত ভোটদান হৈছিল। हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। সংবাদমেলত সাংসদ সঞ্জয় ৰাউত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। তেওঁৰ মন্তব্য, যদি নিৰ্বাচন আয়োগ জীয়াই আছে তেন্তে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক। কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে উত্তৰ দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে এইখন চৰকাৰৰ গোলামী কৰি থকাৰো অভিযোগ সাংসদগৰাকীৰ। এই 39 লাখ ভোটাৰ বিহাৰলৈ যাব বুলি কটাক্ষ সাংসদগৰাকীৰ। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। সংবাদমেলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাৰামতী সমষ্টিৰ সাংসদ সুপ্ৰিয়া সুলে এটা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে। তেওঁৰ দাবী, মেচিনত নহয় বেলটত অনুষ্ঠিত কৰক ভোটগ্ৰহণ। संसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए वो माड़ा विधान लोकसभा से चुन के आए, उनके ही सोलापुर जिले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मार्केटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं। तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहां पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहां की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত 3গৰাকী সাংসদে ভোটাৰ তালিকাৰ জালিয়াতিৰ অভিযোগক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰো প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব লক্ষণীয়। লগতে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়াও হ'ব চাবলগীয়া।